This is NJ here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my student, Shotao, Namaskar, Marhaba, Assalamu alaikum, Tajahao, David, viewers and listeners. Today we are going to view the use of modal verb needs to. Needs to is an important modal verb. It is used in common communication and speaking. Let's start our lesson behind on the whiteboard with the help modal verb needs to. Needs to is a modal verb and ये जो है modal verb आमतौर पे इंग्लिश बोलचाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है. आइए इससे बने हुए जुड़े हुए जुमलों को देखते हैं and make practice with these sentences. Let's start up here. The first sentence you see, my students, is Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. Bina needs to work hard. Bina is a subject and a file and a noun. Needs to is a modal verb and work hard is a basic word. मेहनत करना. Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. You see, my students, the first sentence is Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. Bina is a subject and a noun. Needs to is a modal verb and work hard is a basic verb. Basic verb. Bina को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. Bina needs to work hard. Bina को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. Let's see the next statement. आइए अगले जुमले को देखते हैं. Next one is Alina needs to improve. Alina needs to improve. Alina needs to improve. Alina is again a subject and noun. Needs to means requires to improve, to make better, to improve. So Alina needs to improve. Alina needs to improve. नीला को बेहतर से बेहतर होने की ज़रूरत पड़ती है. नीला needs to improve. Alina needs to improve. Alina needs to improve. नीला को बेहतरी लाने की ज़रूरत पड़ती है. Improve means to gradually make improvement, to show improvement. So Alina needs to improve. Alina needs to improve. Alina को बेहतरी की ज़रूरत पड़ती है. Alina needs to improve. Alina को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती है. Let's see the next statement. आइए अगले जुमले को देखते हैं. Next is Nilo needs to take rest. 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 Nilo को आराम की ज़रूरत पड़ती है. Nilo is a subject and noun and needs to is a modal verb and take rest is a basic verb and an object. So Nilo needs to take rest. Nilo needs to take rest. नीलो को आराम करने की ज़रूरत पड़ती है. Nilo needs to take rest. Nilo needs to take rest. नीलो को आराम करने की ज़रूरत पड़ती है. A beautiful sentence. आइए स्टूडेंट्स अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Next one is Faisal needs to stay in Paris. 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 Faisal is a subject and a noun. Needs to is a modal verb and stay in a phrasal verb and Paris is an object. So Faisal needs to stay in Paris. Faisal को पेरिस में क़याम की ज़रूरत पड़ती है. Faisal needs to stay in Paris. Faisal needs to stay in Paris. Faisal को पेरिस में क़याम की ज़रूरत पड़ती है. Faisal is a subject and a noun. Needs to is a modal verb and needs to stay. Stay is a basic verb and stay in is a phrasal verb and Paris is an object. Faisal needs to stay in Paris. So Faisal को पेरिस में रुकने की ज़रूरत पड़ती है. Faisal को पेरिस में क़याम की ज़रूरत पड़ती है. Faisal needs to stay in Paris. Faisal को पेरिस में क़याम की ज़रूरत पड़ती है. Hey students, I should mention one thing, that modal verbs are those verbs that help other verbs to complete a sentence. Modal verbs are those verbs
verbs that help to complete a sentence, that help other verbs to complete a sentence. अज़ीज़ तलबा, मॉडल वर्ब जो होते हैं इमदादी इन्हें फ़ेल कहा जाता है, इमदादी अफ़ाल कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स को इमदादी अफ़ाल कहा जाता है। इमदादी अफ़ाल जो होते हैं ये दूसरे अफ़ाल की जुमलों को मुकम्मल करने में मदद करते हैं। इनकी डेफिनेशन ये है, मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट हेल्प अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। The words that help other verbs to complete the sentences are called modal verbs. वो अल्फाज जो दूसरे अफ़ाल की जुमलों को मुकम्मल करने में मदद करें इमदादी अफ़ाल कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स को उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहा जाता है, इमदादी फ़ेल कहा जाता है। इंडिविजुअली होगा तो इमदादी फ़ेल कहलाएगा, और अगर मॉडल वर्ब्स होगा प्लूरल होगा तो इमदादी अफ़ाल कहलाएंगे। तो जो कोई भी इमदादी फ़ेल है उसका काम ये होता है कि वो दूसरे वर्ब की फ़ेल की जुमलों को मुकम्मल करने में मदद करता है, जो कि हमने आज के जुमलों में प्रैक्टिस में देखा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आइए अगले जुमले को देखते हैं। Rex needs to manage the party. 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 Hey my students, Rex is a noun and a subject. Needs to is a modal verb, and manage is a basic verb, and the party is an object. So Rex needs to manage the party. Rex को ज़ियाफ़त का एहतमाम करना पड़ता है। Rex needs to manage the party. Rex को ज़ियाफ़त का पार्टी का एहतमाम करना पड़ता है। Rex को पार्टी का इंतज़ाम करना पड़ता है। So needs to is a modal verb and manage is a verb, and needs to helps the verb manage to complete this statement. Rex needs to manage the party. Excuse me. Here see my students. Rex needs to manage the party. Rex needs to manage the party. Rex को पार्टी का एहतमाम करना पड़ता है। Rex को पार्टी का इंतजाम करना पड़ता है। Manage means to complete the arrangements. To complete the arrangements. Rex needs to manage the party. Rex को पार्टी के इंतजाम करना पड़ता है। Rex को पार्टी का एहतमाम करना पड़ता है। Hey my students, these are very important phrases and modal verbs. Let's say once again. आइए इन्हें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Hey see my students, first one is Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina needs to work hard. Bina को मेहनत करना पड़ती है। And next is Alina needs to improve. Alina needs to improve. Alina needs to improve. Alina को बेहतरी की ज़रूरत पड़ती है। Alina needs to improve. Alina को बेहतरी लाने की ज़रूरत पड़ती है। And next is Nilo needs to take rest. 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 Nilo को आराम की ज़रूरत पड़ती है। And next is Faisal needs to stay in Paris. 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 Faisal को पेरिस में क़याम करने की ज़रूरत पड़ती है। And last one is Rex needs to manage the party. Rex needs to manage the party. Rex needs to manage the party. Rex को पार्टी का इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ती है। Hey my students, these are very interesting phrases, including modal verbs and phrasal verbs and basic words. Memorize these sentences. I wish you all the best. I'll see you again. Goodbye. Goodbye.